Okay, now today's class we are going to discuss about what are the various types of pure substances. Okay, so let us come on to the today's topic. Okay, the first is types of pure substances. So on the basis of chemical composition, a pure substances can be classified into two types. Either they are called elements or they are called compounds. Okay, so on the basis of their chemical composition, a substance can be classified into two categories. Either they are called elements or compounds. Okay, now what are called then pure substances? What are these pure substances? A pure substance is that which is made up of only one kind of substances. For example, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन. ओके, ऐसे सब्सटेंस है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो या एक ही टाइप के एलिमेंट्स हो, दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस. नाउ the purest form of any substance is known as elements. I have already told you that elements are the purest form of any substances or any matter. Okay, so then how will you define these elements? अगर ये purest substance है किसी भी substance के लिए या किसी भी matter के लिए, तो how will you define an element? An element is the simplest form of matter which cannot be broken down into simpler substances by any physical or chemical method. Okay, so elements are so small and so basic that they cannot be broken into smaller substances by any physical or chemical method. Okay, neither by physical or chemical method these can be broken down into smaller substances. Now it is made up of same kinds of atoms. These elements, they are made up of same kind of atoms. Okay, for example, your carbon, nitrogen, oxygen, these are the examples of these elements. Now, like pure substances, elements are also divided into three main categories. They are metals, non-metals, and metalloids. Okay, so let us come on to the metals. So these are we'll identify metals on the basis of their few properties. Okay, so here we are talking about the physical properties of the metals. Okay, because chemical properties of the metal, it's not very difficult. It's very difficult to study in a very short interval. So we'll discuss what are the physical properties or those properties which can be observed from our eyes. Okay, these are the properties that can be observed by easily or from the eyes. They are known as physical properties. So let us see some of the physical properties of metals. First, they have a lustrous surface. Means metals जो होते हैं generally shiny होते हैं. Luster का मतलब होता है shine. Metals are shiny in nature. Okay. Now what about another word? They are generally having silver gray or golden yellow color. Okay. Metals की जो color होती है general color. ऐसे तो metals और भी color होते हैं, but जो सबसे common color होती है या तो वो silver gray होंगे या golden yellow color होंगे. Okay. So first metals, most of the metals they are shiny, उनमें चमक होती है, अपनी चमक होती है. Now they are silver gray or golden yellow color. Yes, that is very peculiar about these metals. And the third one is they can conduct electricity and heat. Now अगर इनसे पास करोगे electricity या heat को तो ये conduct करेंगे. So you can say metals are good conductor of heat and electricity. तो इनको बोला जाता है कि they are good conductor. Why? Because इनसे अगर electricity या heat को पास करोगे तो एक corner से दूसरे corner में easily ये पास कर देते हैं heat को. Now what about the fourth property, that is they are ductile in nature. What do you mean by ductility then? ये ductility जो होती है property by which a substance can be drawn into a very thin wire. तो जो मेटल को अगर चाहो तो एक बहुत पतला वायर उसका बना सकते हो. जैसे आप देखो होगा गोल्ड एंड सिल्वर वायर बहुत ही पतले होते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. ओके, सो वो प्रॉपर्टी कहाँ से आते हैं? द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू दैट मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी. सो मेटल्स बहुत ज्यादा डक्टाइल होती है. इनफैक्ट गोल्ड वायर का अगर 1 ग्राम लिया जाए तो एक बहुत लंबा एक वायर बन जाएगा, बहुत 200 या 300 मीटर का एक वायर बन जाएगा एक ग्राम से. तो यू कैन इमेजिन हाउ मच डक्टाइल a metal is. Now what about another property, that is known as they are malleable. Malleable means they can be converted into a very thin sheet. ये इनको अगर hammer करोगे या फिर roll करोगे by using very high pressure, then they will convert it into a very thin sheet. Take the example of gold foil, silver foil, aluminium foil. ये आपके daily life में आप देखते हो gold foil and silver foil, they are used in case of expensive sweets, and silver foil that is used for keeping our
food warm. So ये सारे जो चीजें जो आप रेगुलर देख रहे हो, तो what are these? These are due to the properties of metal, that is they are malleable in nature. Now for sixth one, that is they are sonorous. Sonorous means when you are striking the metal with any hard object or hammer, you can say, then they will produce a ringing sound. Means इनका जो एक sound ऐसा नहीं है कि complete एक बार ring होके रुक जाएगा. It will go on for a say 10 or 20 seconds. What is the reason? The reason behind it is this: these sounds are produced due to vibrations, and metals, they are capable of vibrations, and since they are capable of vibration, they will produce a ringing sound. So once you will find that when you are ringing the bell or any other thing, then it will continue for some time. What is the reason? Because the vibration will continue. Okay, so the sound is produced due to that vibration. Now they have high melting and boiling point. जनरली मेटल्स की जो होती है उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्ड. नाउ द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी वी आर डीलिंग इज दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ओके, जनरली मेटल्स जो होते हैं, जितने मेटल्स उनमें ज्यादा तक सॉलिड स्टेट होते हैं. एकमात्र नॉन मेटल जो मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में आता है, दैट इज योर मरकरी एट रूम टेम्परेचर. So only metal that is present in liquid state, that is your mercury, and that too in room temperature. Room temperature ऐसा नहीं है कि आपका room temperature, we are talking about the temperature of 25 degree Celsius. Okay, so 25 degree Celsius में ये जो mercury होगा, ये आपके liquid state में exist करेगा. Now let us take some examples of metals. See, in all this metal, what you find in common? In all this metal, you find a common, that is your color. You see, the color, what is the basic color here? All are having the shades of this color. That's what I am explaining. Silver gray. All these metals except copper, all this having the similar shade, that is silver gray appearance. So that's why I have taken most of the metals, they are having silver gray appearance. Except copper and gold, most of them are having silver gray appearance. So that's why I have taken the physical properties of metal, that is this one. Now you see, one more property you will observe, that except this magnesium, you will find it all this metal, they are shiny in nature. They are having certain sign. Okay, so that is also the one of the major or important property of metal, that is they are shiny in nature. You see that except magnesium little bit, and most of the metals, they are shiny in nature. Okay, now let us come on to the next topic, that is non-metals. What are called non-metals? These non-metals are again observed by observing its physical properties. So let us observe some of the physical properties of non-metals. They show a large number of colors. So unlike metals, which show only 2 or 3 colors, it show large number of colors. Okay, so non-metal having different kind of, they are generally brittle in nature. Brittle, what do you mean by brittle? Means once you strike the non-metal with a hammer, okay, or by any means hard object, then it will simply break like a glass. Brittle means it will break. Okay, so what about the no metals? Metals को अगर आप गर्म करते हो, ये करते हो, strike करते हो, it will change its shape. Sometimes it will become flat, sometimes it will become a different shape. It will change the shape. But non-metals, when it is strike with a hard object or hammer, it will simply break like a glass. Okay, so that is the basic difference between metals and non-metal. Now the third one is they are poor conductor of heat electricity. Means इनसे अगर आप चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करना चाहो, so it will not. Why? Because non-metals are poor conductor of heat and electricity. Okay, now they are non-lustrous, sonorous and malleable. What do you mean by non-lustrous? इनकी जो कलर होगी बहुत ही डल कलर होगी, इनमें कोई साइन नहीं होगा. ओके, एंड नॉन सोनोरस मीन्स अगर इसको करोगे तो ये टूट जाते हैं, तो इनमें साउंड प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं होता है. साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है जो लस्टरस होते हैं, जो हार्ड होते हैं. सिंस दे आर सॉफ्ट मेटल, सो दे आर सॉफ्ट सब्सटेंसेस, सो they are not sonorous in nature. And malleability means इनमें थिन शीट बनेगा ही नहीं. Okay, so ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, जो characteristics, these three are the characteristics of a metal. These three properties are absent in non-metals. Now next property is they have low melting and boiling point. जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि metals की boiling and melting point ज्यादा होती है, ऐसे ही उसके ठीक अपोजिट non-metals की melting and boiling point
कम होती है. Okay, so that's why they are having very peculiar taste. Peculiar. Now they are having usually found in solid and gaseous state. Now one thing about the non-metal is they are found in solid or gaseous state. ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल सारे लिक्विड ही होते हैं, सॉलिड होते हैं, कुछ गैसियस स्टेट में ही मिलते हैं. जैसे सॉलिड स्टेट में कौन कौन से होंगे? बोरोन, फास्फोरस, कार्बन, लाइक दिस मैनी नॉन मेटल्स आर देयर. ऐसा ही गैसियस स्टेट में हो जाएंगे नाइट्रोजन, ऑल द नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, फिर हेलो फ्लोरीन के बाकी सारे फैमिली हेलोजन फैमिली. सो दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन मेटल्स. नाउ इन दैट फ्लोरीन फैमिली और हेलोजन फैमिली only one non-metal is there among all the non-metal which is in liquid state, that is bromine. Bromine is the only non-metal which exists in liquid state. Okay, so among all these metals and non-metal there are only two elements which exist in liquid state. In metal that is mercury, in non-metal that is bromine. Okay, so इन दोनों metals और non-metal में दो ही substance है जो कि liquid state में मिलते हैं. एक हो गया metal में mercury हो गया और non-metal में bromine. Now let us see the non-metals. Non-metals आप ये चारों ऑब्जर्व किए तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? You will find that except iodine all are having a very dull color, although they are different color. See, iodine having a purple color, this is a say yellow color, red color, black color. So they are having different color, no problem. But what about the texture? Except iodine all are non-lustrous in nature. So that is also one of the exception. Among all the non-metals, iodine is the only non-metal which is lustrous. उनमें साइन होता है, बाकी कोई भी non-metals के अपने साइन नहीं होते हैं, वो just color impart करते हैं, different colors. So that is also one of the basic difference between a metal and non-metal. ठीक है, ये भी एक difference है जिससे आप बता सकते हो कि metals and non-metals अलग होते हैं. आयोडीन को छोड़ के कोई भी non-metals की अपनी साइन नहीं होती है. ओके, यहाँ में देखिए कलर डिफरेंस हो सकता है, जैसे पर्पल हो गया, आप देखिए येलो हो गया, रेड हो गया, देन ब्लैक हो गया. तो कलर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कलर्स में साइन नहीं हो सकता. नाउ वी हैव कम ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज मेटलॉइड्स. ओके, just I was explaining, so some elements have intermediate properties between metals and non-metals, they are called metalloids. So ये metalloids क्या होते हैं? Metalloids are those substances whose properties lies between metals and non-metal. मीन इनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मैच करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मैच करते हैं. सो उनके एग्जांपल्स क्या होंगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. अब यहाँ में मैंने कंपैरिजन के लिए आई हैव टेकन द डायग्राम आल्सो फॉर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम. अब इनमें सारे में कॉमन फीचर क्या है? यू सी all these substances except germanium, they are having shiny appearance. What is the property of shiny appearance? Means they are metallic. Now they are having a non-conductor of electricity, so it indicates that they are non-metals. So like this, these metalloids, some property they are having similar to metals, some property they are similar to non-metals. Since इनकी ज्यादा प्रॉपर्टी जो मेटल से मैच करते हैं, so they are considered as metalloids, means like metal, not metals but like metals. So इनके जो प्रॉपर्टी कुछ मेटल्स है नॉन मेटल दोनों से मैच करते हैं, लेकिन ज्यादा मेटल से करते हैं, that's why they are known as metalloids. Now let us come on to the next topic that we are discussing, that is compounds. What are called then compounds? Compounds फिर क्या होंगे? A compounds is a substance composed of two or more elements chemically compound in with one or one another in a fixed ratio. ये कंपाउंड जो होंगे ये क्या होंगे? दो मिनिमम टू या मोर एलिमेंट्स होने चाहिए. ओके, लेकिन कंपाउंड जनरली आप देखोगे कि तीन या तीन से ज्यादा एलिमेंट होंगे. एक ही कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट का है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल्स. दो एटम्स के जो होते हैं उनको एलिमेंट्स को बोलता है मॉलिक्यूल्स बोलता है. सो कंपाउंड ओके, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन. एग्जांपल वाटर, मीथेन, सोडियम क्लोराइड, शुगर एक्सेट्रा. तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे कि सॉरी टू भी हो सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ में देखिए वाटर में कितने एलिमेंट हैं? दो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ओके, व्हाट अबाउट मीथेन बनता है कार्बन एंड हाइड्रोजन से. व्हाट अबाउट सोडियम क्लोराइड? टू एलिमेंट्स, सोडियम एंड क्लोरीन. शुगर में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये कंपाउंड जो होता है, these compounds they are formed when two or more elements combine together in a fixed ratio or proportion. Okay, ratio में combine करेंगे तभी ये compound बनेगा. Okay, now let us see
What are the properties of these compounds? Okay, so the first property is that it has fixed composition throughout the bulk of the substance. Then here is a term called bulk. Bulk means कहीं से भी लो. अगर सपोज एक कंपाउंड लिया आपने, कंपाउंड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, एक बाहर से लिया, एक कंपाउंड को पूरा तोड़ दिया और बीच से उस कंपाउंड के बीच से एक सॉलिड बल्क के बीच से लिया, तो कहीं से भी लोगे तो प्रॉपर्टी और उसका जो बोल सकते हो उसकी कंपोजिशन होगी वो सेम रहेगी, चाहे वो आप सरफेस से लीजिए चाहे अंदर कहीं से भी लीजिए, द प्रॉपर्टी और द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड विल रिमेन सेम. ठीक है, जो कंपोजिशन उसके बाहर है वैसे ही अंदर ही होगा उसका. नाउ द सेकंड, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन. अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो तो इसको अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में टूट सकते हैं. ओके, कंपाउंड्स को अगर रिएक्ट करोगे केमिकली तो अपने एलिमेंट्स में टूट सकते हैं, दैट इज फिजिबिलिटी. ओके, द थर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट. अब देखिए ये बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है. जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मीथेन. अब कार्बन जो होता है वो सॉलिड, हाइड्रोजन इज ए गैस, लेकिन जो मीथेन क्या होता है वो गैस होता है. अब अगर कंपेयर करोगे मीथेन की प्रॉपर्टी और कार्बन हाइड्रोजन से तो पूरे डिफरेंट है. कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर अलग अलग होगा तो उसको बोला जाएगा इनऑर्गेनिक. ओके, लेकिन अगर वो मीथेन बन जाएगा तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगा. तो प्रॉपर्टी पूरा डिफरेंट होगा. मीथेन की प्रॉपर्टी कार्बन हाइड्रोजन से मैच नहीं करेगी, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, कि वो जिस एलिमेंट से बने होते हैं उनसे वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से मैच नहीं करते. अब मीथेन एक गैस हो गया, कार्बन एक सॉलिड हो गया और हाइड्रोजन एक गैस हो गया. ओके, सो लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो होगी पूरी मैच नहीं करेगी. बहुत सारे प्रॉपर्टी जो मीथेन के होंगे कार्बन हाइड्रोजन से मैच नहीं करेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ ए कंपाउंड. कि ऐसे ही हो सकते हैं, आप वाटर को ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे तो बनेगा वाटर. नाउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो हर प्रॉपर्टी वाटर से मैच नहीं करेगी. मोस्टली प्रॉपर्टी जो होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग होगा और वाटर का प्रॉपर्टी अलग होगा. जैसा आप जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही गैस है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लिक्विड. सो या वन ऑफ द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है. दूसरा और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो वाटर से मैच नहीं करेंगे. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज कंपाउंड हैव आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर. कंपाउंड जो होता है होमोजीनियस होता है, मींस इसमें आप दो कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते. जैसे आप होमोजीनियस मिक्सचर आपने पढ़ा होगा कि टू कंपोनेंट्स होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट इसको अलग नहीं कर सकते. ओके, इतनी प्रॉपरली मिक्स होंगे कि आप उन दोनों को इंडिविजुअली अलग नहीं कर सकते बाय एनी मींस. नाउ fifth one is compounds have sharp and fixed melting point. What do you mean by sharp? Sharp means agar suppose there is a compound whose melting point is 110 or 120 degrees Celsius. So once the compound will change into liquid state immediately. Once the temperature changes to 120 degrees Celsius, सारा का सारा compound एक बार से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. ओके, ऐसा नहीं है कि अभी लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो गया और 2-4 डिग्री के बाद वो पूरी तरह से चेंज हुआ. तो ऐसा नहीं, एक झटके से पूरे सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. वही प्रॉपर्टी है एक कंपाउंड का, कि अगर कंपाउंड प्योर है तो पूरा का पूरा एक साथ लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी फिक्स होगी. तो वो कंपाउंड आप चाहे एक प्रोसेस से बनाइए कि चाहे किसी प्रोसेस से बनाइए, अगर वो कंपाउंड सेम है तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो फिक्स होगी, चाहे वो नेचर में मिलता हो चाहे आप आर्टिफिशियली बना रहे हो. अगर वो कंपाउंड आपका प्योर है तो उसकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी वो फिक्स होगी. ओके, और शार्प होगी. शार्प मींस जितना है, अगर 120 तो 120, 121 भी नहीं. ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस दैट मिक्सचर एंड कंपाउंड्स दे आर वेरी मच सिमिलर. दोनों में ही दो या दो एलिमेंट्स लेते हैं. देन व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड कंपाउंड? बिकॉज़ मिक्सचर में भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट लेते हैं, कंपाउंड सब्सटेंस लेते हैं, एंड कंपाउंड में भी लेते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन this mixture and compounds? So let us see. Elements or compounds are simply mixed, so no new substances are formed. अब मिक्सचर में क्या होता है कि सिर्फ जो सब्सटेंसेस या जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जस्ट ऐड किया जाता है, उसमें कोई नया सब्सटेंस बनने के चांसेस नहीं होते. व्हाट अबाउट द कंपाउंड्स? द सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर टू मेक न्यू सब्सटेंस. अब यहाँ में क्या होगा, सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है और उसको कंडीशन दिया जाता है जिससे कि वो आपस में रिएक्ट करे और एक नया कंपाउंड बनता है. ओके, सो मिक्सचर में कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जस्ट वो एडिशन है. बट कंपाउंड में क्या होता है कि दे विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अनदर कंपाउंड.
नाउ एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। मिक्सचर में क्या होगा कि दो सब्सटेंस जो ले रहे हो उसकी कोई वेट नहीं करना है या फिर कोई करना है, जस्ट आप रेंडमली दो सब्सटेंस लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, इट बिकम्स ए मिक्सचर। देन व्हाट अबाउट द कंपाउंड्स? when these two substances, same substances, when they compound in a fixed ratio of their masses, they will form compound। अगर इसी सब्सटेंस को अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया जाए उसके मासेस के, देन इट विल फॉर्म ए कंपाउंड। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि थोड़ा सा अंतर है, इसमें एलिमेंट लेते हैं, इसमें भी वही लेते हैं, बट ओनली इनमें जो कैलकुलेटेड अमाउंट लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसमें रिएक्शन होता है। नाउ द थर्ड, द मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इच कंपोनेंट। मिक्सचर जो होगा अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे अगर दो कंपोनेंट बने हैं तो दोनों का ही प्रॉपर्टी मिक्सचर में शो करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज कंपाउंड डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट एलिमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल लेके और इसका मीथेन का बताया था कि कंपाउंड्स जो होगा जिससे वो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी सारे के सारे शो नहीं करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी उनके शो करते हैं, बट मेजोरिटी दे विल शो देयर ओन प्रॉपर्टी। बट मिक्सचर जो होता है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन को जब मिक्स कर दिया जाएगा तो उसमें कार्बन की प्रॉपर्टी भी होगी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी होगी, ओके। बट वही जब कार्बन हाइड्रोजन मिक्स करके अगर मीथेन बना देता है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। So since the methane is a compound and carbon and hydrogen is a mixture, so where carbon is in solid state and hydrogen is in gaseous state. Now components can be easily separated by any mechanical method which is suitable. मिक्सचर को आप चाहो तो अलग अलग मेथड से, फिजिकल मेथड मीन्स इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, सुटेबल एक फिजिकल मेथड सर्च कीजिए, देन उसको आप दोनों को अलग कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड बट ओनली बाय केमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड्स को अगर अलग करना है तो उसमें एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस लेना होगा, तभी ये आपस में अलग होंगे। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। यहाँ में आयरन जो हो गया मेटल हो गया, सल्फर इज अ नॉन मेटल। सो अगर इन दोनों को अलग करना है आपको, तो अलग करने का जो बेस्ट मेथड है, इसमें एक मैग्नेट डाल दीजिए। मैग्नेट डाल दोगे तो मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट होगा? आयरन। सो आयरन जब जैसे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गया, बचा कौन सा? सल्फर। सो दोनों अलग हो गए। नाउ व्हाट हैपन, लेट अस टेक द सेम मिक्सचर, आयरन एंड सल्फर को लेते हैं, उसको गर्म कर देते हैं, ठीक है। अब गर्म करके वो क्या बन जाएगा? व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर दे विल फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज आयरन सल्फाइड। अभी आयरन सल्फाइड को अगर बोला जाए उनको अलग कीजिए, आयरन एंड सल्फर को, अब मैग्नेट डालिए तो मैग्नेट को उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन? Because there is a formation of another compound that is iron sulfide which is non-magnetic in nature. Here the iron is magnetic and sulfur is non-magnetic, तो इससे अलग हो गया। लेकिन अगर आप सेम मेथड यहाँ में लगाओगे तो आपको आयरन एंड सल्फर अलग नहीं हो पाएगा। Why? Because here we have a formation of a compound and the property of iron and sulfur is completely different from iron sulfide, because iron sulfide जो होगा वो एक आयनिक कंपाउंड है, और आयरन हो गया आपका मेटल हो गया, और सल्फर हो गया नॉन मेटल। तो सारे की प्रॉपर्टी आपके डिफरेंट होंगे, ओके। सो फॉर योर इवैल्यूएशंस आई हैव टेकन सम एग्जांपल, some questions for your evaluation. Answer the following question. First, classify the following into elements, compounds and mixture. ये सारे हैं, इनको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर में आपको सेपरेट करना है, ओके। नाउ which of the following material falls in the category of pure substances? यहाँ में कुछ एलिमेंट सब्सटेंसेस दिए हैं, इनको आपको बताना है कि कौन प्योर है और कौन इम्प्योर है, okay. Now the class is open for discussion, so please